अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजीज़ अर्ली हिस्ट्री। इससे पहले हम जो है 4-5 डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर चुके हैं और डिसऑर्डर्स हम लोग साथ साथ जारी रखेंगे। लेकिन साइकोलॉजी की हिस्ट्री भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे तो हिस्ट्री के हवाले से 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस तो मस्ट आते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि हिस्ट्री के टॉपिक्स को भी हम साथ साथ कवर करते रहेंगे। इससे पहले स्ट्रक्चरलिज्म के हवाले से मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, लेकिन वो एक थॉरो या एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन नहीं था। आज की वीडियो में हम हर चीज़ को एक तरतीब के साथ स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से स्कूल ऑफ थॉट्स की बुनियाद पड़ी या किस तरह से जो है साइकोलॉजी को एक साइंस की हैसियत मिली। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइकोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या है। द टर्म साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स साइकी मीनिंग द सोल एंड लोगोस रेफरिंग टू द स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट। कि साइकोलॉजी क्या है, दो ग्रीक वर्ड्स, दो यूनानी अल्फाज से मिलकर बनी है। साइकी का मतलब है सोल और लोगोस का मतलब है कि स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट, यानी किसी भी चीज़ का की स्टडी या मुताला। These two Greek roots were first put together to define a topic of study in the 16th century, where psyche was used to refer to the soul, spirit, or mind as distinguished from the body. कि 16th सेंचुरी में ये दो अल्फाज इस्तेमाल किए गए जहाँ पर साइकी का मतलब बताया गया कि सोल है या स्पिरिट है या माइंड है, और ये चीज़ें जो हैं वो बॉडी से एक डिफरेंट एंटिटी है। अच्छा, इसके हवाले से एक एमसीक्यू हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 2 बार बल्कि डिस्कस कर चुके हैं कि डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो डुअलिज्म यानी माइंड और बॉडी जो है दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास रेने डेस्कार्टिस ने दिया था। ओके, अ न्यू साइंस इज़ बॉर्न। ठीक है, कि साइकोलॉजी जो है वो एक न्यू साइंस के तौर पे किस तरह उभर कर सामने आई। तो साइकोलॉजी के जो इंटेलेक्चुअल पेरेंट्स हैं वो फिलोसफी और फिजियोलॉजी हैं। जर्मन प्रोफेसर थे विल्हेल्म वोंट। ठीक है, इनका जो है साइकोलॉजी में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले साइकोलॉजी को बाकायदा तौर पर साइंस का दर्जा दिलवाने में अपना रोल अदा किया। तो जर्मन प्रोफेसर थे विल्हेल्म वोंट, who eventually changed this view. Wundt mounted a campaign to make psychology an independent discipline rather than a stepchild of philosophy and physiology. In 1879, Wundt succeeded in establishing the first formal laboratory for research in psychology at the University of Leipzig. तो ये हमारे पास जो है विल्हेल्म वोंट का थोड़ा सा एक रोल आ जाता है कि किस तरह से उन्होंने साइकोलॉजी को बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया। उसके बाद वोंट ने ये कहा कि अ, जो सब्जेक्ट मैटर है इस न्यू साइंस का, यानी उन्होंने लेबॉर्ट्री बना दी बाकायदा और उसको साइंस का दर्जा भी दे दिया। लेकिन जो साइंस है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, उसमें स्टडी किस चीज़ को किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू वॉट इट वाज कॉन्शियसनेस। एंड व्हाट इज कॉन्शियसनेस? द कॉन्शियसनेस इज द अवेयरनेस ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस। द साइकोलॉजी बिकेम द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स की बुनियाद पड़ी। ठीक है, और ये स्कूल ऑफ थॉट्स जो है इसमें इन स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर किस किस का काम ज़्यादा है, और कौन कौन जो थे इसमें जो है स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर किसका किरदार था। सबसे पहले जो स्कूल ऑफ थॉट्स हमारे पास आए वो स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म थे। लेकिन चूंकि विलियम वोंट के हवाले से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट था वो स्ट्रक्चरलिज्म
हमारे पास आया। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो विलियम वॉन्ट का काम था इसमें। इन साइकोलॉजी द फर्स्ट टू मेजर schools of thoughts were structuralism and functionalism, and they were entangled in the first great intellectual battles in the field. Structuralism evolved through the leadership of Edward Titchener, an Englishman who immigrated to the United States in 1892 after training in Moore's lab. He taught for decades at Cornell University. Structuralism was based on the notion that the task of psychology is to analyze consciousness into its basic elements and investigate how these elements are related. It means just as physicists were studying how matter is made up of basic particles, the structuralists wanted to identify the fundamental components of conscious experience, such as sensation, feelings, and images. Although the structurists explored many questions, most of their work concerned sensation and perception in vision, hearing, and touch, which are our primary senses. To examine the contents of a consciousness, the structuralists depend on the method of introspection or the carefully systematic self-observation of one's own conscious experiences. As practiced by the structuralists, introspection required training to make the subject, the person being studied, more objective and more aware. As compared to the structuralism, the functionalists were heavily influenced by William James, a brilliant American scholar who took a different view of psychology's task. Functionalism was based on the belief that psychology should investigate the function or purpose of consciousness rather than its structure. James argued that the structuralist approach missed the real nature of conscious experience. Consciousness, he argued, consists of a continuous flow of thoughts. In analyzing consciousness into its elements, the structuralists were looking at static points in that flow. James wanted to understand the flow itself, which he called the stream of consciousness. Today, people take this metaphorical description of mental life for granted, but at that time, it was a revolutionary insight. James went on to make many important contributions to psychology, including a theory of emotion that remains influential today. And inshallah, in our next lectures, we will go through the theory of emotion. Okay, next, his landmark book, Principles of Psychology, became standard reading for generations of psychologists. It is perhaps the most influential text in the history of psychology. Whereas structuralists naturally gravitated to the lab, the functionalists were more interested in how people adapt their behavior to the demands of the real world around them. Instead of focusing on sensation and perception, the functionalists began to investigate mental testing, patterns of development in children, the effectiveness of educational practices, and behavioral differences between the sexes. And these new topics may have played a vital role in attracting the first women into the field of psychology, and that woman was Mary Whiton Calkins, who born in 1863 and died in 1930. The impassioned advocates of structuralism and functionalism saw themselves as fighting for a high stakes, the definition and future direction of the new science of psychology. Their war of ideas continued
energetically for many years. Who won? Most historians give the edge to functionalism, but both schools of thought gradually faded away. But the practical orientation of functionalism fostered the development of two important descendants, behaviorism and applied psychology. And we will, inshallah, discuss both of them momentarily. So, let me know, how did you like today's topic? Inshallah, we will meet again in the next video with a new topic. Till then, Allah Hafiz.